हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, हमने ऑलरेडी क्वांटिटेटिव ट्रेड्स कॉन्सेप्ट क्या है डिटेल किया देखा है। तो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, देन कम टू दिस वीडियो सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। इन एन एक्सपेरिमेंट, clones of plant is grown in a field. The plants were observed to be of different heights. Okay, different heights के plants हमें दिखे. When a graph was plotted for frequency of plant on y-axis against different heights on x-axis, a bell-shaped curve was obtained. From the above, it can be concluded that observed variation in height is due to it being a polygenic trait, environmental effect, variation in genotype, influence of environment on different genotypes. So option 2 is the correct answer, environmental effect. इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से हमें बेल शेप कर्व एंड हाइट में वेरिएशन यहाँ पे देखने मिलता है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट, इनकरेक्ट। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस रिजल्ट्स इन अ रेंज ऑफ मेजरेबल फेनोटाइप्स फॉर अ पॉलीजेनिक ट्रेट। इनकरेक्ट देखना है, कभी कभी करेक्ट इनकरेक्ट हम करेक्ट ही अज्यूम करते हैं, ओके, इनकरेक्ट हम देखते नहीं है, राइट। तो दैट वी हैव टू फोकस, इनकरेक्ट हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस रिजल्ट्स इन रेंज ऑफ मेजरेबल, सो यस दिस इज करेक्ट। पॉलीजेनिक ट्रेट्स ऑफन डेमोन्स्ट्रेट कंटिन्यूअस वेरिएशन, यस, also correct. Certain alleles of quantitative trait loci have an additive effect on the character trait, yes, is also correct. तो हमारा वीडियो है, आई विल अटैच दैट इन आई बटन, उसमें हमने सब ये डिस्कस किया है पॉइंट, राइट। So if these three options are correct, 4 will be obvious wrong, and this will be the incorrect statement. What is it? Alleles governing quantitative traits do not segregate and assort independently. See, incorrect statement है, do not segregate दिया है, segregation होता है and independent assortment भी होता है, so this is a wrong statement. Interacting genes which are involved in producing continuous variation in phenotype in a population are known as or constitute codominant genes, no, pseudogenes, no, alleles, no, QTLs, yes, quantitative trait locus. हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, राइट। इसीलिए PYQs प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। A disease-resistant plant was crossed with a susceptible plant, and the resulting F1 plant were disease-resistant. See, F1 plant was self, and the F2 individuals were analyzed for qualitative and quantitative disease resistance. The following statements were hypothesized. तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस फॉलोज मंडेलियन रेशियो, यस, ओके। क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस, जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होते हैं मंडेलियन रेशियो फॉलो करते हैं, हमें पता है। इन द F2 individuals demonstrating qualitative resistance is dominant, yes, करेक्ट है। हाउ करेक्ट? F1 प्लांट्स में हमें डिजीज रेजिस्टेंट फेनोटाइप दिखा, तो F1 प्लांट में डोमिनेंट जो कैरेक्टर होता है वो ही हमें दिखता है, राइट। तो डिजीज रेजिस्टेंट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, तो ए एंड बी करेक्ट है। दैन नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मोनोजेनिक, नो, पॉलीजेनिक होता है, ऑलवेज दिया है, तो दिस इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑलवेज ये एक्सट्रीम वर्ड है, राइट, एंड मोनोजेनिक तो नहीं है, पॉलीजेनिक होता है।
अगर सी रॉन्ग है, डी करेक्ट होगा। व्हाट इज डी? क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस कैन बी पॉलीजेनिक। यस, हो सकता है क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस पॉलीजेनिक भी हो। तो आंसर इज ए बी डी, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अ न्यू ट्रेड was found to be highly variable in population. It showed a bell-shaped distribution and is shown to be influenced by environmental factors. That trait can be a monogenic trait, no. A polygenic trait, yes. A non-quantitative trait, no. Due to point mutation in regulatory, तो हमने पढ़ा ही नहीं है। Polygenic trait हमें पता है, which gives bell-shaped curve, right? And also environmental factors are responsible. Wheat plants can have kernels of white color or in shades of red, that is light red, red, dark red and very dark red, that is purple. The researcher made the following cross. के यहाँ पे क्रॉस दिया है टेबल में. Following conclusions are made from the results obtained. Again correct we have to see. It is a dihybrid cross where white color is coded by gene A and purple color is coded by gene B. See, I will explain. First of all, 16 total 16 offspring. So this confirm this is a dihybrid cross. A dihybrid cross means two genes are involved, right? तो dihybrid cross तो सही है, लेकिन एक जीन ए है वाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है एंड जीन बी पर्पल कलर, दैट इज रॉन्ग. हाउ रॉन्ग? ये इंटरमीडिएट है, एवरेज रेड, तो दिस विल बी हेटेरोजाइगस. ओके, एंड ये जो एक्सट्रीम है दिस विल बी कंप्लीट डोमिनेट, दिस विल बी कंप्लीट रिसेसिव, राइट. तो both the genes are responsible for producing color. ओके, ये रेड है, पर्पल है एंड ये वाइट है, राइट. तो दिस इज रॉन्ग. जीन ए वाइट कलर प्रोड्यूस करेगा, नो. टू जीन्स both coding for the color of kernel, right? Both are producing color. Each gene having two alleles. See, one that produce red pigment and other that produces no pigment. Confirm हुआ है इसी क्रॉस से. अगर एक एक जीन प्रोड्यूस है तो रेड कलर हमें दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा है वो कलरलेस फेनोटाइप, नो फेनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है बाय दिस स्टेटमेंट. Okay, so B is correct and B is in the option 1 only. Option number 2, B only. Okay, next statement. 4 genes, one coding for no pigment. No, wrong. 4 genes नहीं है यहाँ पे ऐसी स्टैटिक कुछ भी दिया है. स्टार्टिंग में ही हमें समझ रहा है ये रॉन्ग है, 4 genes नहीं है. That trait is influenced by environment leading to observed variation. हाँ, ये करेक्ट है, बट इसका ऑप्शन नहीं है, बी एंड डी नहीं है, तो बी इज कन्फर्म करेक्ट. अगर बी एंड डी होता तो वो भी करेक्ट होता, राइट. Body weights of rabbits is determined by pairs of alleles at two loci, A and B, that are additive and equal in the effects. So this is from additive effect. Additive effect भी हमने डिस्कस किया है. Okay, rabbits with genotype A minus, A minus, B minus, B minus have an average 1 kg body weight, whereas individuals with genotype A plus A, B plus B plus have animals that average 3.4 kg in weight.
A male rabbit is A minus A minus B minus B minus crossed with a female of a genotype A plus A plus B plus B plus. What will be predicted average weight of F1 progeny of this cross? मतलब F1 progeny का weight हमें find out करना है. Very easy. Okay. This is also very easy. A minus A minus A minus B minus cross with A plus A plus B plus B plus. इसका वेट है 1 kg, इसका वेट है 3.4 kg, राइट. एंड जो F1 होगा वो हेट्रोजाइगस होगा. वी नो दैट A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस. तो इसका जो वेट होगा पेरेंट से मीडियम होगा, इंटरमीडिएट होगा, राइट. या वी कैन से एवरेज होगा, मीन होगा. ओके, सो हाउ टू डू दिस? बेसिकली 1 प्लस 3.4 अपॉन 2 के मीन फाइंड आउट करना है हमें. So this gives you 4.4 upon 2. This is 2.2. So option number 1 is correct. Okay. तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एंड बहुत सारा रिपीटेशन भी हमें देखने मिलता है यहाँ पे, राइट. सेम टॉपिक मतलब पॉलीजेनिक ट्रेट, environmental effect, whale shape curve. Okay. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.